Yes, start explaining. नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे पहले मैम कैमरा मैन मैं भी थोड़ा चल मैम आप भी आओ नेशनलिज्म इंडिया सबसे पहले 1916 में गांधी जी जब इंडिया में आए थे साउथ अफ्रीका में मतलब सत्याग्रह से उनको ब्लैक्स को थोड़ा वो मतलब एपाथीट से मैम वो दिला के तो यहाँ पे भी उन्होंने वो क्या दिला के एपाथीट छुटकारा फ्रीडम फ्रीडम फ्रॉम एपाथीट एंड फिर व्हाई मैं फिर उन्होंने 1916 में खेड़ा में मैं पीरेंट्स के लिए मैं सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था फिर वो 1917 नहीं 1916 में चंपारण में ऑर्गेनाइज किया था 1917 में खेड़ा में और 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में किया था फिर 1990 में जब रोवाल्ड एक्ट पास हुआ ना तब मतलब रोवाल्ड एक्ट के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना ट्रायल के में 2 इयर्स की मतलब प्रिजन में रख सकते थे तो उसमें ऐसा रॉलेट एक्ट हु पास्ड दिस रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट that you have to mention. The British government passed this Rowlatt Act where they can keep in prison for 2 years to Without any trial. political leaders without any reason. Right? Yes. And then Gandhiji thought that we want non-violent movement against such unjust laws. Then on 6th April, there 1919, 6th of 1919, a movement was launched. There were strikes and rallies all over the country. And in 1913, 1913 in April, Jallianwala Bagh incident took place when where many people gathered to attend the Baisakhi fair and General Dyer attacked them. Yes. उसके बाद And there was a well full of उसको वो emphasize करता है वो sentence तो वो डालोगे ना तो it will look more attractive. और फिर kind of कि आपके आंसर्स में वो प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा और फिर मैम नॉन कॉर्पोरेशन में मतलब गांधी जी पूरे इंडिया में नहीं था कोई सिटीज में था फिर गांधी जी ने डिसाइड किया कि भाई इसको थोड़ा और ब्रॉड करने की नीड है देन by the defeat of the Ottoman Empire in Turkey there was rumors among the world that the Haas Treaty would be going to sign to कम करने का बोलते reduce the power of the Khilafat then in India Muslim brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali formed an organization in Bombay and they joined with Gandhiji and in Calcutta session Gandhiji उसको बताया क्या बोलते हिंदी में बोलो गांधी जी ने मैम मतलब सब लीडर्स को वो प्रपोज कर दिया कि भाई अभी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट साथ में ही होगा नॉन वायलेंस yes so you only told the word Gandhiji proposed to all the leaders yes वो तो नहीं याद a proposal for all the leaders that these two will work together non-cooperation and khilafat will work together and then फिर नॉन कॉर्पोरेशन के गांधी जी ने बेसिक्स बताया कि भाई कैसे कैसे होना चाहिए जिसमें से reducing the power of British boycotting goods and then it was finally started in 1921 January then there were in city strikes were there boycott of foreign goods and liquor shops were picketed but मैम जैसे कि मैम फॉरेन के सब इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो लोगों को तकलीफ आ रही थी मैम फिर yes फिर स्कूल के स्टूडेंट और लॉयरों ने वापस अपना ज्वाइन कर दिया yes see what was the situation I elaborate something to this ये जो खिलाफत मूवमेंट में हुआ ये सब राइट जब उन लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल्स को दे लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स ऑल द एम्प्लॉयज ऑल द टीचर्स दे लेफ्ट ऑल द फॉरेन गुड्स बॉयकॉट किया बर्न कर दिया फॉरेन क्लोथ्स को बट उसके बाद जो स्केर्सिटी फेस हुई देयर वाज लेस नंबर of Indian institutions educational related right educational Indian institutions उस टाइम पे बहुत कम थे तो उन लोगों ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लीव तो कर दिया बट अब वो लोग कहाँ जाएंगे बिकॉज उस टाइम एम्प्लॉयमेंट भी करना था सो दैट वाज अ थिंग जहाँ पे उन्होंने फिर से स्कूल्स ज्वाइन कर लिए एंड दे स्टार्टेड विद देयर एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस राइट फूड शॉर्टेज की अगर हम बात करें क्लोथ्स की अगर हम बात करें तो क्लोथ्स में हमारे पास वी वर हैविंग ऑप्शन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ खादी बट दैट वाज टू एक्सपेंसिव
right? उस time khadi was too expensive that normal class of people या peasant group of people were not able to purchase that, and they were not able to use in their daily lives. So that's why they started using foreign clothes again. आई बात समझ? और इस तरह से वापस उन्होंने सारी फॉरेन चीजें यूज करना शुरू कर दी. गॉट इट? दैट वाज द रीजन कि ये खिलाफत क्यों ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाया, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग दैट रिसोर्सेज जो हमारी पॉपुलेशन के वांट्स सेटिस्फाई कर पाते विदाउट यूजिंग और विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज. वही तो बोला मैंने कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे तो वो कहाँ काम करते. सो काम करना भी उनके लिए जरूरी था उस टाइम पे. सो दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड working again with the same government schools and colleges or institutions where they were teaching. आई बात समझ? Yes, Krishna, over? नहीं नहीं, then complete it. And then civil disobedience was started all over the India. It was ended in 1932 ना. मतलब 1931 हाँ में. Gandhiji or CN Das were arrested by the British officials, and then Gandhiji signed the Gandhi Event Pact to attend the second roundtable conference in London. Then Gandhiji entered the movement. After returning from there, Gandhiji restarted the movement in 1933, and by by 1934, the movement lost its support. Yes. Okay, गांधी इरविन एक्ट के बारे में भी थोड़ा इलॉबरेट करना कृष्णा. गांधी इरविन एक्ट में why गांधी जी came back and started again? एग्जैक्टली exactly. वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन तक गए, लेकिन उनको वो चीजें उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई जो उन्होंने पर्पसली रखी थी. दैट वाज द रीजन व्हाई गांधी जी स्टार्टेड खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अगेन कमिंग बैक टू इंडिया. राइट? ओके, सॉरी. Firstly, the idea of satyagraha. Satyagraha was started in 1916 when Gandhiji came from America and he needed uh, South Africa as he has freed the peasants from uh, apartheid. Next, when he came to India, he wanted freedom of the Indian people from the British rule. So in 1916, he went to Champaran Kheda. 1917, he went to Bihar, and in 1918 he came to Ahmedabad, Gujarat, to free the meal workers from the British rule. Secondly, the when the Rowlatt Act was introduced by the imperial laws, it was introduced by imperial laws. In after all the Indian political opposed the rule. Still, if the rule was passed, the Gandhiji wanted to oppose it by the movement. He started opposing it by satyagrahas and non-cooperation movement. Firstly, his ideas about non-cooperation movement was like he didn't want. He thought if the India opposed the rule of British, the British rule would collapse in next 2 years only. But the participant reacted. The participants of the non-cooperation movement didn't react in the way the Gandhiji needed. Secondly, they started violence in the cities, and it was not favorable to Gandhiji as he has thought. Next, as he called up the movement in 1922, Gandhiji wanted some rules and rights that should be given to Indians. So he signed a Gandhi Irwin Pact. Nextly, the rules that he wanted was not filled up, so he came back and started the civil disobedience movement. This movement was also based on non-violence. The civil disobedience movement started after when it was started. A Simon Commission came to India in 1928. It was in when Simon sir came to India and he was welcomed by a logo Go Simon Go. Nextly, the salt march was started as there were a lot of taxes on the salt. So Gandhiji's thought was like the poor can also afford salt, and salt is important for every single one. Next, after he started his salt march with 78 volunteers of his own, he needed to continue the movement, and next volunteers became.
came to join him, and when he reached Dandi, he evaporated the seawater and he invented salt. So nextly, the taxes from salt were removed. The nextly, this movement was also collapsed as Dr. B.R. Ambedkar needed separate electorates for Dalit people, which Gandhi didn't agree because it would create a lot of time for discussion taking. Next, the at the end, the folklore and this movements were nationalism movements were created by Gandhiji. He created a tricolor flag with Ashoka Chakra in between. Next, the leaders in Tamil created nationalism books, volumes in different languages. Thank you. Good, very good. Can you just give some respect to the person?